आज इस वीडियो में हम AQEB क्लास 9 एग्जामिनेशन अप्रैल में 2018 मैथमेटिक्स पेपर 1 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। In question number 1, we have to simplify this expression and we have to give the simplified expression of this term. So, उसे simplify करते हैं x square divided by x raised to the power minus 4. इस डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। सो हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू द पावर प्लस 4। जब भी हम शिफ्टिंग करते हैं फ्रॉम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर और फ्रॉम डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, हम हमेशा पावर की साइन को रिवर्स कर देते हैं। सो इन दिस सिचुएशन द वेरिएबल्स आर सेम, so we will add the powers of both variables. So final answer would be 2 plus 4. So x raised to the power 6 is the correct answer for this question. So next we have question number 2, and question number 2, we have the value of p as 11 upon 15 and q plus r is given as 14 over 5. We have to find the value of p plus q plus r. So p plus q plus r, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और हमें जो वैल्यू गिवन है वो है q प्लस आर की। सो q प्लस आर की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं 14 ओवर 5 एंड द वैल्यू ऑफ p इज 11 ओवर 5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन देन LCM वुड बी 5 and it will become 11 plus 14. So 11 plus 14 will be equals to 25 over 5, and our final answer would become 5, 1 is 5 and 5 fives are 25. So 5 is our final answer. So the for question number 2, the correct answer is option D. So let's move to our question number 3 and question number 4. If P and Q are the real numbers and P inverse is the multiplicative inverse of P, then which of the following statement is false? So we have to identify the incorrect statement. So P and Q, they both are real numbers and P inverse is the multiplicative inverse of P. P inverse is the multiplicative inverse. So P multiplied by Q will be a real number, and P multiplied by Q would be equals to Q multiplied by P. So हम यहाँ P और Q की जगह कोई भी real number ले सकते हैं. Like for example, P is 5, Q is -2. So P inverse will be equals to 1 over 5. सो पी और क्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट अ रियल नंबर. सिमिलरली पी और क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय पी, एंड पी को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वुड बी पी. So the correct answer for this question is option D, in which P multiplied by its multiplicative inverse. This is always equal to unity or equals to 1. जब भी हम किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा 1 के इक्वल आएगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन 3 इज सी. Let's come to question number 4. In question number 4, we have a radical expression such that 2 square root 2 cube. We have to give this expression into exponential form. So the exponential form for this expression would become 2 raised to the power 3 and whole power 1 over 2. So after simplification, we can get 2 raised to the power 3 over 2. So the correct option we have is 2 raised to the power 3 over 2. So question number 4, the correct answer is option A.
Let's move to our question number 5. In question number 5, we have set A and we have A union B. And we have A intersection B as empty set. Then we have to find the value of B. हमें सेट A की वैल्यू गिवन है और हमें A यूनियन B गिवन है और this expression shows that there is nothing common between ए एंड बी. ए और बी के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है और ए की वैल्यू 1 2 3 है तो ए यूनियन बी के अंदर 1 2 and 3 ये तीनों वैल्यूज़ हमारी हो गई सेट ए की. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 और 5 है ये हमारे सेट बी की वैल्यू होगी बिकॉज ए और बी के अंदर कोई कुछ भी कॉमन नहीं है. ए और बी जो है वो डिसजॉइंट सेट्स हैं. सो the correct answer for this question number 5 we have is option B. So let's see question number 6. In question number 6, we have two sets A and B. Then which of the following is in our binary relation from A to B? सो ए से बी तक हमें बाइनरी रिलेशन फाइंड करना है. सो बाइनरी रिलेशन उस वक्त होगा जब हमारे पास ये जो एक्स की वैल्यूज़ हैं या फिर ये जो हमारे ऑर्डिनेट्स हैं वो बिलोंग करते हों सेट ए से और y वाली वैल्यूज़ या जो ऑर्डिनेट्स हैं ये बिलोंग करते हों सेट बी से. सो ऑल दी एक्स शुड बिलोंग्स टू सेट ए एंड all the values of y should belongs to B. So in the first binary relation A and B, they are the subsets of A. 10 and 20 that are present in B, it's mean this is a binary relation. Similarly, in option 2, 10 and 20 are the values of x that are not present in set A. This means this cannot be our binary relation. In the third one, A is present in set A and this 20 is present in set B. It means this can be a binary relation. Similarly, 10 comma B, 10 does not appear in set A. So this is the incorrect answer. So we have these two binary relation in option 1, 2, 3, and 4. So for question number C, let's see what question number 6. The correct answer for this question is 1 and 3. So this is the correct option for question number 6. Next we have question number 7 and 8. And in question number 7, we have a universal set 1 to 10 and E is the set of even numbers. We have set E that is the set of even numbers. Then we have to find the value of E complement, and E complement means universal set minus set of even numbers. सो यूनिवर्सल सेट हमारे पास जो मौजूद है 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, 9 and 10, and set of even number will be 2 4 6 8 and 10. सो इस यूनिवर्सल सेट में जो इवन नंबर्स का सेट फॉर्म हो रहा है दैट इज 2 4 6 8 10. सो आफ्टर सब्ट्रैक्शन 2 4 6 8 and 10 we will get 1 3 5 7 and 9. So the correct option in question number 7 is option B, 1 3 5 and 5 7 and 9. Next, we have question number 8 in which two sets are given, set x and set y. Then which of the following represent a function from x to y? So for a function from x to y, it should be noted that domain of the function should be equal to set x. फंक्शन की जो डोमेन है वो x के बराबर होनी चाहिए और डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए. सो इन दिस ऑप्शन we have the domain 10 and 10 is a part of x but 20 यहाँ पर मौजूद नहीं है. इट्स मीन ये फंक्शन नहीं हो सकता. यहाँ अगर हम देखें तो डोमेन में 10 रिपीट हो रहा है. इट्स मीन ये फंक्शन नहीं है. ऑप्शन सी हमारे पास 10 और 20 है दैट इज इक्वल टू सेट x और यहाँ हमारे पास 10 रिपीट हो रहा है. इट्स मीन ये भी फंक्शन नहीं है. सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन सी जो कि फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है.
So let's move to our question number 9 and 10. And in question number 9, the exponential form of log of 3 log of 5 to the base 3, इसकी हमें exponential form बनानी है. Log of 5 to the base 3 is equals to 2x. सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि लॉग की जो बेस है उसको हम ऑपोजिट दूसरी साइड पे बेस बना देते हैं, और यहाँ जो ऑलरेडी बेस होती है वो बन जाती है पावर. सो 5 would be equal to 3 raised to the power 2x. So this is the correct representation of our exponential form of this logarithmic form. So question number 9, we have the correct answer, that is option A. In the next question, we have to find the value of x, and we are given with log of x to the base 6 is equal to 2. So इसको भी हम उसी तरह से exponential form में convert करते हैं. So 6 will become base here and 2 will become the power. So x will be equal to 6 raised to the power 2. This is the exponential form. So x would be equals to 36. So the correct answer we have is option C. So let's come to question number 11. And in question number 11, we have to rationalize this expression. So let's rationalize this expression 2 plus square root 3. हम इस एक्सप्रेशन को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और कॉन्जुगेट से डिवाइड कर देंगे. 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3. So multiplying and divide by the rational multiply and divide by the conjugate of that term. This process is called rationalization. So इसको जब हम simplify करेंगे तो square root 2 minus root 3 into 1 is 2 minus root 3, and denominator में हम हमेशा difference of square का formula apply कर देते हैं. So हमारे पास expression form हो जाएगा 2 minus root 3 divided by 4 minus 3. सो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे. सो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा 2 माइनस रूट 3 ओवर 1. सो द करेक्ट ऑप्शन वी हैव इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 11. Similarly, question number 12 की तरफ चलते हैं. We have to simplify this expression a4 minus 4a square divided by a square minus 2a. सो न्यूमरेटर में अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें ए स्क्वायर इज कॉमन, तो मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया. वी विल गेट ए स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ से अगर हम ए कॉमन ले लें तो हमारे पास बच जाएगा ए माइनस 2. फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ए स्क्वायर, यहाँ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. सो इट विल बिकम ए प्लस 2 एंड ए माइनस 2 divided by a into a minus 2. So common factors को हम cancel out कर देते हैं. So we will only get a into a plus 2. So question number 12, the correct option, let's see which is the correct answer. हमारे पास factorized form में given नहीं है तो हम इसको again multiplication कर देते हैं. a into a will become a square and a into 2 will be 2a. So correct option we have is option A for question number 12. Let's come to question number 13 and 14. In question number 13, we have to simplify this expression 2 into square root 2 plus 1 minus 3 square root 2. So 2 into square root 2 will become 2 into 2 root 2, and 2 multiplied by 1 will be equals to 2 minus 3 root 2. सो दीज आर दी लाइक टर्म्स. इसके हम सिंप्लीफाई कर देते हैं. 2 माइनस रूट 3, 2 रूट 2 माइनस 3 रूट 2. सो दिस वुड बिकम माइनस 1 रूट 2 प्लस 2, जिसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2. So for question number 13, we have the correct answer, that is option B. So here we have our correct answer. Let's see question number 14. And in question number 14, we have an expression, cubic expression
u cube minus 27v cube. We have to give this expression into factorized form. तो उसकी complete cubing apply कर देते हैं. So this would become u cube minus 3v cube. So if we can recall the formula of a cube minus b cube, this is equals to a minus b, a square plus ab plus b square. So u cube will become u cube minus 3b whole cube. तो हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. तो ये हमारे पास फर्स्ट a माइनस बी विल बी इक्वल टू u माइनस 3b, और साथ में हमारे पास a स्क्वायर ले लें तो इट वुड बिकम u स्क्वायर. Then AB will become plus 3uv plus b square would be 9v square. So let's see what we have in a correct option. So option D, that is the correct factorized form of the above expression that was in question number 14. So quickly let's move to our next question, question number 15 and 16, in which we have to factorize the given expression. So in question number 15, we have an expression 25x squared plus 5ax plus 10x plus 2a. So let's make the pair of first two and last two terms and take common among those four terms. So 5x is the common term, so we will have 5x plus a. Similarly, we can take 5 common, so we will get, or we can take 2 common from this, and we will get 5x plus a. So again, we have the 5x plus a common factor. So the remaining is 5x plus 2. So this is the factorized form. And in question number 15, the correct option we have in the first one, that is option A, 5x plus a and 5x plus 2. Another term that we have is question number 16. And in question number 16, we have to factorize this expression. So the expression we have is 8p cube plus 12p square cube plus 6p cube and plus q cube. So let's see which expression is this. इसको हम जो है वो check करते हैं formula apply करके cube का. So this expression can be written in the form of 2p whole cube, and as we can see, this is also a perfect cube of q. So let's recall the formula of cube, that a plus b whole cube, it is equals to a cube plus b cube plus 3a square b and plus 3ab square. So इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं यहाँ इसको चेक करता हूँ, लाइक प्लस 3a square b plus 3ab square. And the value of a, we know that a is 2p and b is q. And similarly यहाँ पर भी वैल्यूज को पुट कर देते हैं. सो a की जगह हमारे पास आ जाएगा 2p और यहाँ हमारे पास आ जाएगा q. ओके, सो लेट्स चेक. यहाँ हमारे पास ये जो टर्म बनी है वो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को मैच कर रही हैं. सो 3 इंटू टू पी क्यू स्क्वायर इंटू क्यू, यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 3 ज़ा 12 पी स्क्वायर क्यू. सिमिलरली इस टर्म को देखें तो ये टर्म हमारे पास हो जाएगी 6pq स्क्वायर. इसका मतलब ये है कि हमारा एक्सप्रेशन जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, और इसकी जो फैक्टराइज्ड फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी, a प्लस बी होल क्यूब. द वैल्यू ऑफ a, जैसे हमने कहा कि इट इज़ 2p, और वैल्यू ऑफ b इज़ q. सो दिस विल बिकम 2p प्लस q होल क्यूब. So the correct option in question number 16 is option B. So here we have our correct answer. Let's move to the next question, and we have question number 17. And in question number 17, A ratio B and C ratio D are in
proportion, so we have to identify the componendo property. So componendo property को recall करते हैं कि componendo property में हम क्या करते थे. लेट्स से अगर हमारे पास ये रेशियो है a रेशियो b इक्वल्स टू c रेशियो d. सो अगर हम किसी न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ को डिनोमिनेटर में ऐड कर दें बोथ साइड, या डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ जो हैं वो उसे हम न्यूमरेटर में ऐड कर दें, तो रेशियो के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज, दिस रिलेशन प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी. लाइक फॉर एग्जांपल मैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर्स के अंदर ऐड कर दूं लाइक दिस, सी प्लस डी ओवर डी, या फिर मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के अंदर ऐड कर दूं ए ओवर ए प्लस बी एंड सी ओवर सी प्लस डी. तो जब हम ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, तो एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेशियो हमेशा बराबर रहते हैं. सो दिस प्रॉपर्टी इज़ दी कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी. और इस कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी में जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 17 का, दैट इज़ ऑप्शन ए. सॉरी, ऑप्शन ए हमारे पास जो है वो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है. लेट मी करेक्ट दिस. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Okay, let's move to question number 18. Ali bought an efficient washing machine that saves 10 gallons of water per load. So we have two quantities that are gallons and load. How many gallons of water will he save if he washes 15 loads of laundry? So, first of all, 10 gallons of water per load, ये हमारे पास सेविंग हो रही थी. सो हाउ मेनी गैलन्स ऑफ वाटर विल बी सेव इफ ही वॉशेस 15 loads of laundry? सो दिस इज ऑब्वियस फ्रॉम दिस क्वेश्चन कि अगर एक लोड ऑफ लॉन्ड्री में अगर 10 गैलन सेव हो रहे हैं, सो फॉर 2 loads ऑफ लॉन्ड्री वी विल गेट 20 gallons ऑफ वाटर. सिमिलरली फॉर 5 loads of laundry we can save 50 gallons of water. So in short, for 15 loads of laundry, we can save 150 gallons of water. So, question number 18, we have got a correct answer, that is option D. Let's see question number 19. And in question number 19, P is a matrix and Q is a matrix. And the order of these matrices are given. It is 1 by 3 and it is 3 by 1. Which of the following matrices represent the order of 1 by 1? So, हमें ऑप्शंस में बताना है कि कहाँ पर जो है वो हमारे पास ऑर्डर 1 by 1 आएगा. सो अगर हम पी और क्यू को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सो मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल बिकॉज द कॉलम्स ऑफ पी इज इक्वल्स टू रोज ऑफ मैट्रिक्स क्यू. So if we can see these number 1 and 1, so this would be the product of P and Q, and the order of the product would be 1 by 1. So it's mean the correct option is PQ. जब हम P और Q को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट का जो ऑर्डर होगा इट वुड बी 1 by 1. So we have question number 20. Question number 20 को सॉल्व करते हैं, in which we have a matrix equation. इस मैट्रिक इक्वेशन में देखते हैं कि हमें क्या क्यू की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है. सो मैट्रिक्स वी हैव इज 2 3 -3 एंड 0. साथ में हमारे पास एक मैट्रिक्स क्यू ऐड हो रहा है, दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स. सो इस मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए इस मैट्रिक्स को हम दूसरी साइड पे मूव कर देंगे. सो क्यू वुड बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स माइनस 2 3 -3 एंड 0. तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली 0 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ साइंस चेंज हो जाएंगी. -2 -3 +3 एंड 0. सो इन क्वेश्चन नंबर 20 the correct option we have is option D, that is the correct answer. So let's see question number 21. And in question number 21, we have to find the determinant of this matrix 5 -3 1 and 2.
सो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पे, और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का मेथड सिंपल सा है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, देन हमने अपर डायगनल और लोअर डायगनल्स को मल्टीप्लाई कर दिया विद a नेगेटिव साइन between them. So 5 into 2 is 10 and 3 into minus 1 is minus 3. So 10, it would become 10 plus 3. So 10 plus 3 is equal to 13. So correct option in question number 21 is option C. Next, we have question number 22. And in question number 22, the ages in years of 9 children in a group is 4, 7, 8, 9, 6, 10, 5, 8, and 10. We have to find the median of this range, of this data. So, as we know that whenever we find the median, we always arrange the data in our ascending or descending order. So, सबसे पहले हम जो है वो इसे ascending और descending order में arrange कर लेते हैं. सो हमने इन तमाम डेटा को जो है वो अरेंज कर लिया इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर. सो वी हैव टोटल 9 टर्म्स. इट्स मीन द फिफ्थ टर्म विल बी आर मीडियन. 9 टर्म्स हमारे पास टोटल मौजूद हैं, 9 चिल्ड्रंस की एजेस हैं. सो यहाँ से हमारे पास जो फिफ्थ टर्म होगी इट वुड बी आर मीडियन. सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. So the median of the data in question number 22 is 8. So we have a correct answer in option C. So let's see our question, next question. And in this question, we are given with a graph. So let's see what we have in this graph. So इस क्वेश्चन में जो हमें ग्राफ मौजूद है उसे देखते हैं. The graph bar chart shows the number of employees hired by a hospital in a various department in 2015 and 2016. So we have 4 departments: urology, pediatrics, gynecology, and pathology. Use the given information in question number 23 and 24. So question number 23 को हमें आंसर करना है with respect to this given graph. In pediatric department, the percentage change इस डिपार्टमेंट की हमारे पास बात हो रही है, और then we have to find the percentage change that shows the hiring in 2016 as compared to the last year. So as we can see in the pediatric chart that this is 2015, we have the number of employees were 8, and in 2016 the number of employees are 6. So we have a decrease in 2 employees in this year. So we have to find the percentage with respect to the previous year. So the change in this year is 2 employees, and the percentage would be equals to 0.25, and multiplied by 100 would become 25%. So there is a decrease, जैसे कि हमें नजर आ रहा है 8 employees से last year and we have 6 employees. डिक्रीज हो रहा है ऑफ 2 employees. सो परसेंटेज कैलकुलेट की हमने. सो वी गेट द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन ए, that the in pediatric department there is a 25% employees are decreased. So with this same graph we have to find the number of employees hired in 2016. So 2016 के अंदर हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टोटली हमने हायर किए. सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2016 में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो थे दैट पर 8, and in 2016 pediatric department we have number of employees 6. Gynecology में we have 7 employees, and in pathology we have total of 2 employees. So इन तमाम employees को अगर हम add कर दें 8 plus 6 plus 7 plus 2, so we will get total 23 employees are there in 2016. So the correct option in question number 24 is option C. Let's see the next question, that is question number 25. And in 25, in the given triangle ABC, we have to find the side BC that is equal to what? So
This is angle 30, this is 20. It is all equal to 120 plus 30, that is equals to 150. It's mean this angle would be equals to 30 degree. So we know that when two angles of a triangle are equal, then the side opposite to them is also equal. So this angle is 30 and this angle is also 30. The side opposite to them is A, and the side opposite to this 30 would also be equals to A. इस 30 डिग्री के सामने जो साइड है इट इज ए, तो यहाँ भी 30 डिग्री के सामने जो साइड आएगी इट वुड बी इक्वल टू ए. So for question number 25, we have the correct option, that is option B. 25 is B. Let's see the next question, that is question number 26. In question number 26, we have a diagram and we have to find the value of AB. So as we can see that this is the isosceles triangle because these two angles are equal. This means that the side opposite to them is also equal. ये दोनों opposite sides भी बराबर होंगी. और ये जो line segment है AB, यहाँ हमारे पास 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है. दिस मीन्स दैट कि ये जो लाइन है इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. एंड वी नो दैट जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं सो देयर इज टू थिंग. वन इज द 90 डिग्री इट मेक्स विद द लाइन सेगमेंट एंड द अदर थिंग इज द टू सेगमेंट्स आर equal. So if this is 3 centimeter, then this would be also 3 centimeter. The value of AB will become 6 centimeter. So correct option for this question number 26 is option C. Next, we have question number 27. In this question, we have a given diagram in which D and E are the midpoints. Midpoints means ये दोनों segments आपस में बराबर हैं और ये segment इस segment के बराबर है. Then AB is 4x, D is 16, and EC is 40. Then we have to find the value of x. सो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. सो वी नो दैट जब भी हम किसी ट्राइंगल के दो मिड ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं सो दिस लाइन इज ऑलवेज हाफ ऑफ द थर्ड साइड. सो मिड पॉइंट्स हमारे पास ए सी और बी सी के थे. इट्स मीन ये जो साइड डी ई है वो हमेशा हाफ होगी ऑफ द साइड ए बी. सो डी ई हमें गिवन है 16 एंड द ए बी इज 4x. सो उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. 2 1 is 2 and 2 2s are 4. So 16 is equals to 2x. So the value of x would become 8 centimeters. So the correct option for question number 27 is option A. Let's see the next question. That is question number 28. In this diagram, the xy is the xy bisect the line segment AB. So xy is our bisector, and bisector means this distance are equal. Similarly, it makes 90 degree. This means that this line xy is a perpendicular or right bisector. So if the length of AB is A, the complete length of this segment is A, then we have to find the value of OA. So अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इट्स मीन ये दोनों सेगमेंट्स बराबर होंगे. सो द टोटल लेंथ हमें गिवन है ए. सो दिस वुड बी हाफ ऑफ ए एंड दिस वुड बी द हाफ ऑफ ए. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 28 वी हैव ऑप्शन बी, दैट इज द करेक्ट आंसर. So let's see question number 29. And in question number 29, this is the triangle ABC. And which of the following is the true statement? So in from the given triangle, we know that this is the longest side 4 and longest side 4 and this is the smallest side, that is 2. And according to the theorem, the side at the angle opposite to the longest side is always greater. So this would be the longest angle and this would be the smallest angle. So for question number 29, angle C is the smallest
that is greater than A, and the angle B is the greatest. So we have option A, that is the correct answer, कि C एंगल सबसे बड़ा होगा और एंगल B सबसे छोटा होगा. In question number 30, we have a angle bisector. It's mean ये दोनों angles आपस में बराबर हैं. AB की वैल्यू हमें गिवन है 2 and BC is equals to 6 and CD is 3 and we have to find the value of this AD. So angle bisector का थ्योरम हमने पढ़ा था कि if a point lie on the angle bisector, or if any of the angle bisector is drawn in a triangle, then it intersect them into proportion. So अगर हम यहाँ से रेशियो फॉर्म करें, so ratio would become ratio AB to CB. Ratio of AB to CB would be equals to AD and DC. Values को substitute कर देते हैं. 2/6 is equal to x/3. So उसको simplify करेंगे तो 3 वहाँ जाके multiply हो जाएगा. So x would be equals to 2/6 multiplied by 3. So 3 2s are 6/6. So we have the correct answer, that is 1. So for question number 23, the correct answer is option A.